दूसरे अंपायर है मोहम्मद हुसैन। उवैस शाह गेंद को दोनों जानिब मूव कराने में महारत रखते हैं और उवैस शाह के पास भी एक खासा बड़ा तजुर्बा हासिल है। उवैस शाह उनका सामना करे आसिफ मंसूरी। आसिफ मंसूरी सामना कर रहे उवैस शाह का। उवैस एक मरतबा फिर अंपायर के बगल से आए। गेंद की अच्छी गेंद थी इस मरतबा। इस गेंद को कलाइयों के सहारे ढीले हाथों से खेले। शॉट मिड विकेट की जानिब, शॉट स्क्वायर लेग से जब तक खिलाड़ी आते तब तक दोनों बैट्समैन छोड़ बदल चुके थे, यानी कि 1 रन का इजाफा कंवल टाइगर्स के स्कोर में। कंवल का स्कोर हुआ 5। अब जुनैद सामना करेंगे उवैस शाह का। जुनैद ने 4 रन बना रखे हैं। नॉन स्ट्राइकर पे एंड पे है अब आसिफ मंसूरी जिन्होंने 1 रन बनाया। इस मरतबा इस गेंद को ड्राइव कर दिया कवर की जानिब, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, रन आउट होने का खतरा, लेकिन विकेटों में गेंद नहीं लगी। 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के इजाफे के साथ ही जुनैद का स्कोर हुआ 5। कंवल टाइगर्स का स्कोर हुआ 6 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी है। बीच बहरा का ये खूबसूरत ग्राउंड जो अलग लार्ड्स का मंजर पेश कर रहा है। उवैस शाह आए। गेंद की अच्छी गेंद थी इस मरतबा। गेंद को जोरदार अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद आई विकेट कीपर के पास जो विकेटों के साथ चिपके खड़े हैं। और माइक थमा देता हूं। उवैस शाह एक मरतबा फिर। उवैस शाह आए। गेंद करेंगे आसिफ मंसूरी को। आए अंपायर को क्रॉस किया। इस गेंद को जोरदार अंदाज में ड्राइव कर दिया। गेंद आई डीप लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हुआ 7 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 7 बिना किसी नुकसान के। अपने सामीन को बताता चलो 193 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। शाहिद आए। गेंद की अच्छी गेंद थी इस मर्तबा। इस गेंद को रोक कर खेले। गेंद आई वापस शाहिद के पास बगैर किसी रन के। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 7 बिना किसी नुकसान के। एक धीमा स्टार्ट अब कंवल टाइगर्स ने शुरू कर दिया, यानी कि 2 ओवर और 1 गेंद का खेल हो चुका है। 13 गेंदों पे सिर्फ 7 रन बना रखे कंवल टाइगर्स के खिलाड़ियों ने। शाहिद एक मर्तबा फिर। अच्छी गेंद थी, पड़कर बाहर की जाने मूव हुई। बहुत ही अच्छी और नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद को दोनों जानिब मूव कराने में महारत रखते हैं शाहिद। उन सामीन के लिए बताता चलूं जो अभी अभी हमसे लाइव नशरियात में जुड़ चुके हैं। बीच बहरा प्रीमियर लीग का तीसरा मरहला बीच बहरा हायर सेकेंडरी टर्फ मैदान पे जारी है, जहां वादी में पहली दफा तीसरे अंपायर का इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि थर्ड अंपायर के फराइज अंजाम दे रहे हैं जुबैर जो मेरे बगल में बैठे हैं। इस मरतबा इस गेंद को जोरदार अंदाज में ड्राइव कर दिया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा बगैर किसी रन के। 7 तीसरे ओवर का खेल जारी है। 193 रन चाहिए मैच जीतने के लिए कंवल टाइगर्स को। एलिगेंट स्ट्राइकर्स श्रीनगर ने मुकर्ररा 20 ओवर में 192 रन बनाए हैं। शाहिद नबी एक मरतबा फिर।
इस मर्तबा इस गेंद को रोक कर खेले कवर की जानिब ढीले हाथों से और एक रन हासिल किया आसिफ मंसूरी ने। आसिफ मंसूरी का स्कोर हुआ 3, कंवल टाइगर्स का स्कोर 8 बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल जारी है। शाहिद दराज कद के मालिक अपने बॉलिंग मार्क पे पहुंचे, वहां से मुड़े, गेंद को थामे अपने दाएं हाथ में। अंपायर ने हाथ के इशारे से रोक दिया क्योंकि फील्डिंग तरतीब देने में उनके कप्तान खालिद भट्ट अभी भी मसरूफ है, यानी कि शॉट एक्स्ट्रा कवर पे अब खिलाड़ी को तैनात कर दिया। शाहिद एक मर्तबा फिर, इस मर्तबा इस गेंद को ऊंचा खेले, बहुत ही उम्दा शॉट और 1-2 टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ जुनैद का स्कोर हुआ 9, कंवल टाइगर्स का स्कोर हुआ 12 बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 193 रन चाहिए बीजबेहरा प्रीमियर लीग का इनागरल मैच जीतने के लिए कंवल टाइगर्स को। शाहिद एक मर्तबा फिर जुनैद के लिए आई, अच्छी गेंद थी, पड़कर बाहर की जानिब मुंह ही, बहुत ही अच्छी और नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं शाहिद। शुक्रिया मोहम्मद अमीन। तो फिलहाल इमो भाई जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ, तैयार। एक मतलब फिर गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, सामने आसिफ मंसूरी कलाइयों के सारे गेंद को निकाल दिया फाइनल के जानिब से। वहां पे खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन प्रदर्शन देखा जाए तो क्षेत्र रक्षण दौरा, रन केवल एक ही मिलेगा और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो 190 का पीछा कर रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंवल टाइगर्स की टीम, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुनैद जेपी यानी उसके साथ साथ आसिफ मंसूरी शुरुआत करने के लिए आए और अभी भी डटे हुए बीच मैदान में। पारी का ये 4वां ओवर प्रगति पे चल रहा है और स्कोर जो है वो 13 है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और मैं आपको पता चलूं जो गेंदबाज उवैस शाह, लेकिन इस बार पहली विकेट का पतंग होता हुआ जेपी बिल्कुल एक आसान सा कैच थमा बैठे और इस तरह से लगता हुआ ये पहला झटका उवैस शाह के खाते में गई है पहली विकेट। और इस तरह से अगर मैं बताता चलूँ आपको, बिल्कुल जिसकी दरकार यहाँ पे एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर को वे दिलाते हुए आप उनके प्रमुख गेंदबाज अगर देखा जाए तो उवैस शाह न केवल बल्लेबाजी में आज दमखम दिखाया, साथ साथ गेंदबाजी में जब कप्तान के द्वारा गेंद सौंपी गई उसको और शुरुआती झटका देने में वो कामयाब। पहला झटका लगता हुआ और अब नए बल्लेबाज जो बीच मैदान में जाएंगे। अब जो बिल्कुल जो बल्लेबाज इमरान गने अब जाएंगे, बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। अगर देखा जाए तो अगर मैं रत्ना की बात करूं तो बेस्ट ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं और पता नहीं आज किस कारण उसको वन डाउन पोजीशन के लिए भेजा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान गने का टिकना बीच मैदान में जरूरी कंवल टाइगर्स के लिए। अगर यह मुकाबला, अगर एक चीज हासिल करनी है उनको तो कहीं ना कहीं इमरान गने को आज एक अच्छी बल्लेबाजी खेलनी होगी। फिलहाल पहला झटका लगता हुआ कंवल टाइगर्स रत्ना की टीम को 190 के जवाब में अगर देखा जाए तो
पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पे चल रहा है और यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ। और अभी आप तक बिल्कुल मुखातिब हो रहे थे मोहम्मद अमीन, हमारे सीनियर कमेंटेटर। शुक्रिया सर करना चाहूँगा मैं आपको और तमाम दोस्तों को जो अभी BPL यानी बीजबेहरा प्रीमियर लीग पेज पे बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ से मलिक शोएब, उसके साथ साथ राशिकार के अरसू अफशल और बासित रसूल के साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ आपको मुदस्सिर डार, और ये तमाम लोग इस मुकाबले को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी एक विनती रहेगी आप लोगों के साथ, जितना हो सके इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर कीजिए ताकि घर बैठे बैठे क्रिकेट के और भी आप जैसे चाहने वाले होंगे, आप जैसे प्रेमी होंगे, वे भी ये मुकाबले का आनंद ले सके। लेकिन ये भी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल इस लाइव टेलीकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल यहाँ पे उवैस शाह तैयार हो रहे हैं और नए बल्लेबाज इमरान गनई, बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाज बखूबी वाकफियत रखते हैं इस बल्लेबाज से सब। लेकिन यहाँ से अगर मैं बताता चलो आपको, बल्लेबाजी ढंग की करनी होगी आज। फिलहाल तैयार सामना करने के लिए उवैस शाह का एक, अगर देखा विकेट कीपर की मैं बात करूं तो बिल्कुल विकेटों से चुपके हुए है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन मूव मैं कहूंगा यहाँ पे कप्तान दौरा, हालांकि अच्छी गेंद और इसको सम्मान देते हुए गेंद की लाइन के पीछे आए इमरान गनई और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने में कामयाब। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी 13, एक विकेट के नुकसान पे 190 का पीछा कर रही है यहाँ पे इनागुरल मैच BPL थर्ड। और जैसा कि आपको बताया गया था बिल्कुल JK स्पोर्ट्स टॉक शो की वसादत से आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि IPL ऑफ कश्मीर जिसको कहा जाता है, तो क्यों आज विजुअल्स आपके स्क्रीन के सामने उवैस शाह तैयार, अच्छी गेंद, एक मरतबा बेहतरीन गेंदबाजी, सम्मान देते हुए इस बार भी इमरान गनई और वापस अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। रन की कोई गुंजाइश नहीं। उसके साथ साथ राशिक अरसू अफशल राशिकार के और उसके साथ साथ मलिक शोएब, तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने हुए हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल जितना हो सके इस लाइव टेलीकास्ट को आप शेयर कीजिएगा। उवैस शाह की ये गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, गति परिवर्तन देखने को मिला इस बार उवैस शाह द्वारा। लेकिन अंत में देखा जाए तो इमरान गनई बिल्कुल खेलने में कामयाब, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 3 गेंदें 3 डाट गेंदें अब तक इमरान गनई के विरुद्ध करने में कामयाब। अगर मैं बात करूँ यहाँ से उवैस शाह की, उवैस शाह आज बल्लेबाजी में बिल्कुल कमाल दिया और मिस्टर 360 कहलाने वाले खिलाड़ी खालिद भट्ट, बिल्कुल उसका काफ़ी बड़ा योगदान आज अपनी टीम के लिए, कप्तान है और उनकी क़ियादत में एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर की टीम यहाँ पे आई है। उवैस शाह तैयार अंतिम गेंद करने के लिए इस ओवर की, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पे शायद फॉलो थ्रू में गेंद हाथ पे लगी थी, उसके बाद स्टम्प उस पे टकराई और ये देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे, आप देख सकते हो बिल्कुल स्टम्प वहाँ से उखाड़ के, यानी स्टम्प के 2 हिस्से हुए हैं। तो इमरान गनई आप देख सकते हो कितनी ताकत है इनके कलाइयों में और यहाँ से बिल्कुल नई स्टम्प का प्रयोग किया जाएगा। और आपके स्क्रीन के बिल्कुल देख रहे तो रिप्ले में आप देख सकते हो किस प्रकार से स्ट्रोक लगा था, ये देख सकते हो आप, ताकत इतनी कलाइयों में है और बिल्कुल 2 हिस्से यहाँ पे अगर मैं बताता चलो इमरान गनई की जानिब से देखने को मिले। भाग्यशाली कहूँगा मैं कंवल टाइगर्स अनंतनाग को, कि अभी भी क्रीज में मौजूद है। अंततः वहाँ पे अगर देखा जाए तो गेंद शायद हाथ से पहले लगी थी उवैस शाह के, उसके बाद फिर स्टंप से टकराई थी, तो कहीं ना कहीं क्रीज पे मौजूद थे और हमारे साथ बिल्कुल हमारे प्रमुख कमेंटेटर जुड़ गए, तो बिल्कुल माइक थमाने की कोशिश करूंगा मैं उसको। Start of a fresh over. This ball is a play and a miss, beautifully bowled on that occasion. Shahid and Uwais are bowling in tandem. The score after the completion of 4 overs is just 13 without any loss. Beg your pardon, 13 for 1, as Junaid has been dismissed for 9, as it's going to be Uwais and Shahid who are continuing from the 2 ends. Shahid is bowling from the school end at the moment, comes in and bowls. This time he cuts and cuts hard. No chance for the third man fielder, that will run away to the boundary for 4. Beautiful shot on that occasion, just slicing it a little bit, opening the bat face and guiding it to the deep third man boundary. Third man was there,
but he was quite fine on that occasion, as that ball was guided quite wide of the third man fielder into the boundary, using the pace of the bowler on that occasion. 4 more runs, and that boundary gets Asif Mansoor going, and he moves up to 8. Asif Mansoori, who's on strike at the moment. Next delivery, that's driven this time onto the onside, finds the space. That will be back-to-back boundaries. Fielder in pursuit gives up the chase. 2 on the bounce. First was wide and short outside the off stump. The pace was used. The second one was overpitched on middle and leg, and the wrists came into play. Beautiful shot. And that's 2 boundaries on the bounce for Mansoori. Moves into the double figures. He's not out on 12. Sort of a pressure on Shahid now. This time watches it onto the bat, drives it. The bowler in the follow-through, fields, no run. Wicketkeeper standing well back. Short third man in place. Third man is going deep onto the boundary. There is a slip in place, a backward point and a point. There are 2 catching covers, because Asif Mansoori tries to lean into the shot and tries to find the space there. Shahid up to the stumps, bowls to Asif. Asif goes back onto the back foot and then uses the pace. Depth touch down to third man, fetches him another single. That single takes the total of Kanwal Tigers to 22. Shahid Shabir so far has conceded 9 runs in this over. Imran Ganai is yet to score in this innings, batting on 0 of 4. And Asif Mansoor is batting on 13 of 15. 2.5 overs, 18 runs and no wicket. Back goes Shahid Shabir to the top of his bowling mark. He's got a mid-on and mid-off inside the ring. Up to the stumps, bowls to Imran Ganai. Imran Ganai leaves it well alone. First he was interested in playing a shot, then shouldering arms allows it to go through. It's a dot to finish. The 5 overs done. The total is 22 for 1. They're chasing 170 from 90 deliveries. This is a daunting task. This is getting difficult. They need to put up a partnership. They need to take care of that scoring rate. If they don't take care of that scoring rate, well, the time is not far that this chase will derail. They would definitely want this chase to go on. Awais Shah, Akash Ayub, Furqan, Junaid, Khalid, Nadeem Butt, Reis, Nazir, Shahid, Umar, Zahid Nabi in the playing 11 of elegant striker Srinagar. Kanwal Tigers chasing 193. It's a bowling change. Or it's Awais continuing. Yeah. Awais is going to continue from the far end. Long on the boundary for the right-hander. Asif Mansoori goes big. He has launched it over mid-wicket. 1 bounce into the boundary for 4. Fielder was on the long on boundary. He had to run and cover a lot of ground towards his right, and he had absolutely no chance to stop that. Goes whistling into the boundary after a couple of bounces. 4 more runs to start this over on a high. Awais Shah, well, he has to be quite careful on that occasion. If he strays onto the pads, there is a deep square leg, there is a short fine leg. But if the batsman tries to eye that mid-wicket boundary, there is no one. There is a long on, but he's quite straight. There is a fielder at square leg. Mid-wicket is at a shortish position inside the circle. Awais Shah, this time well bowled, equally well played. In front of the fielder, diving towards his right at extra cover. Picks the ball up, throws it in. The batsman will pick up an easy single. So far, Awais Shah has bowled 2.2 overs, no maidens, 9 runs and 1 wicket. He has been miserly in his approach. Awais Shah is betting on, I beg your pardon, Awais Shah scored that brilliant 50, and on the back of that brilliant 50, he's bowling brilliantly here. This time, roll of the wrists, manages to hit it straight to the fielder, fielding at short mid-wicket. That is the captain. That's the captain, Khalid Butt there. Nadeem is asking, what's the target? The target is 193. Back goes Awais Shah to the top of his bowling mark. Runs away, up to the stumps. Balls, hits him onto the thigh.
as he was trying to push and turn that one towards the onside. It's a dot ball, and Owais Shah walks back to the top of his bowling mark to bowl the final delivery of this over. Owais Shah so far he's given away 5 runs from 4 balls, 2 more balls to come. Mohammad Asif Mansoori is on 18. Imran Ganai, well, he's struggling at the moment. He's not out on 0 of 7. Can Owais Shah pick up his wicket? Imran Ganai, he's a dangerous proposition altogether. Finally, he manages to lay bat onto the ball. He manages to turn the ball towards square leg and get up to the mark. A single off his 8th delivery. Imran Ganai moves to the other end. This is not the approach you need when you're chasing 193. You need to come up with some sort of an intent. You need to get out of the blocks quickly. You need to score. You need to get 1s and 2s. You need to score in excess of 7-8 runs and over. Take the game deep. Asif Mansoori comes forward and just deflects it away, I think, of the pads. We'll wait for the umpire's signal. No signals coming from the umpire. It's runs given, end of the over. A single to finish the 6th. Power play is done and dusted, and the total is 29 for 1. The required run rate has jumped up to 11.71. 164 needed from 84. These 2 batsmen, they have to bear out of their skins. Otherwise, this chase is done and dusted. $29 for 1 after 6. Owais Shah 3 overs, 1 for 11. Kanwal Tigers, they need 193 to win. Mohammad Waqas, Imran Ganai, well, he's not looking comfortable out there in the middle, but it won't be long that he will go after the bowling. Nadeem Butt has been introduced into the attack. 6 overs, 29 for 1. 7th over, first ball. Cuts it straight to the fielder. He's a goner. I think he has got it. We'll wait for the umpire signal. The batsman stood his ground. We'll have a look at this. I think he has put it down. The frustration says it all. Yes, he has put it down. That was an easy catch. It's put down at backward point. Mansoori gets a life. Here is Nadeem Butt once more. Up to the stumps. Short, wide, outside the off stump. Umpire signals a wide. Third man is on the boundary. 7th over. Fielding restrictions are over. Cover is sweeping on the offside on the boundary. There is a long on the boundary. Deep square leg. And there is a short mid-wicket and cover at the catching positions. Wicketkeeper is standing well back because Nadeem Butt, well, he is just bowling quick. Up to the stumps. Balls this time once again. Short, wide. It will be given as wide once more.
Irfanul Haq, Ilahi Tausif, Imran Ganai. Well, he's struggling at the moment. Mohammad Waqas, Taq Adnan, Suhaib Baba, Nadeem, Safran Ejaz, Anjum Hussain, Danish Sofi, Imran Bazaz and Manzoor Bhatt. They're watching. You can just share this live broadcast so that Bijbihara Premier League reaches to everyone who is a cricket lover. Next ball. Once again a pitch outside the off stump. Keeps low as well. The batsman was trying to use the pace. Does not make any contact. It's a dot ball. Can have a look at this. Bowling short, bowling wide, but then coming back strongly. Bowling it outside the off stump as the ball kept a bit low as well. Ilahi Tausif has joined us. Arsu official has joined us. Imran Ganai is surely struggling. Right now, it's Asif Mansoori on strike. Nadeem Bhatt this time, he wants to turn. It's off the thigh. Will be given as leg byes. The batsman will pick up a single. Here comes the decision. Here comes the signal from the umpire. Dar Asan, Dadu Rangers, they are playing at JKPL. This is BPL. Arsu official Bilal Ganai. They are joining this live broadcast. You can share this broadcast to a maximum number of people. Here is the next delivery. Right arm over the stumps. Nadeem Bhatt up to the stumps. Bowls to Imran Ganai. Once again gets an inside edge onto the pads. Will pick up a single nonetheless. He's struggling. He's not getting any timing whatsoever. Either he's getting beaten or he's getting those inside edges and playing some ugly strokes at the moment. Dar Asan has joined us as well. It's Kashmir has joined us. Shehzad. Nadan Parinda has joined us as well. Here is Nadeem Bhatt once more. Right arm over the stumps. He's got a mid-on inside the circle. This time he punches it to the left of the fielder. The batsman at the other end, Asif Mansoori, was trying to hair across to go for that single. He was quite eager to come onto the strike. But the batsman at the other end sends him back. Nadan Parinda, Dar Asan. Furqan is playing, but as a 12th man. Furqan for strikers today, as elegant strikers on top at the moment. Next ball. That's up. That's over. That's beautifully struck for 4. That was short, wide and thrashed by the batsman on the up and finding the space because cover was inside the circle. That was always going to run away to the boundary. Finishes the over in style. Over number 7 is gone. The total is 37 for the loss of 1 wicket. Have a look at that shot once again. That was short outside the off stump. He just gets on top of the bounce and beautifully struck down to the boundary for 4. Arsu official Mudassir Rehan Khan, it's K. Amar, Suhaib Baba, Ayan Roof, Dar Umar joining this live broadcast. Live broadcast is looking crystal clear because of the efforts of one and only set up here at Bijbihara Sports Field. The batsman dismissed is Junaid JP. He was the man who was dismissed by OAS for 9 runs. Asif Mansoori and Imran Ganai putting up, it is 13 for 1 at one stage. Now they have just taken the score to 37 for the loss of 1 wicket, putting up 24 runs for the second wicket. Beg your pardon. It's a bowling change from the far end. OAS has been taken off, and it's going to be Umar to bowl. But Sehran, Rehan Khan, Dar Umar, Khalid Butt, an icon player from my hometown for sure. Suhaib Baba, Ayan Roof, and Chote Sarkar has joined this live broadcast here as well. Yawar Abbas, the one and only Yawar Bhai has joined us. Suhaib Baba has joined us as well. So has Munad Tak. BPL is just touching heights each year, and this one is an altogether different season, an altogether different tournament. You can just watch nice camera work, nice live streaming going on at the moment. Seeing that the preparations
have been exceptional. It's one and only RJ Bashir, the owner of State Sports Live, who's doing his wonders here at Bijbehara Sports Field. Next ball, waits for the ball to come, then guides it straight to the fielder at backward point. Oas Shah does the fielding. Cannot be any runs. He's as swift as a tiger there. Imran Ganai is batting on 2 of 10, chewing up a lot of deliveries. This is not helping the cause of of Kanwal Tigers, Anantnag. He needs to get out of the blocks now. He needs to go after the bowling. He needs to unsettle the bowlers. Now, so far it has been Elegant Strikers bowlers. They have been all over these two batters. Field changes now. There's a fielder at deep mid-wicket. Now he comes out of the crease. The fielder had been removed there. He goes exactly in that place and gets it into the vacant space for 4. That is the first boundary and the first shot of some authority from Imran Ganai as he skipped down the track, takes it on and just smashes it through the vacant mid-wicket region. There was no fielder. The fielder was at long on. Another fielder was a deep backward square leg. This is an empty space and the ball whistles away to the boundary for 4. Now there is a deep mid-wicket in place. Imran Ganai as a batter. Now that is gorgeous. Stand and deliver stuff. He came out of the crease, top of the bounce, thank you very much, and has smashed it for 6. This is the approach you need. When you are unsettled, when you're 2 of 10, you have to create your own room, you have to create your own space. Come out of your comfort zone, take the ballers on, make them unsettle. This is what he has absolutely done on the 2 deliveries, but the next one was a peach, an absolute cracker of a delivery, beating the forward prod, and it's a dot ball. 47 for 1, 7.4 overs. They need 146 from 74. It's definitely gettable. At this stage, Elegant Strikers after 7 overs were 61 for 2. Mohammad Asif Mansoori is batting on 23, a runner ball 23. Imran Ganai, he needs to up the ante. Next delivery, once again, that was there to be hit. Since the fielder at mid-wicket was in front of square, there was no one behind the square leg umpire, but he was through the shot early, and that's why it hits him onto the thigh. It's a dot ball. Imran Ganai, 6 and a 4, got him going in this over. But after that, couple of dot deliveries, he's once again looking unsettled. Fielder from deep backward square leg comes inside the circle at short fine leg. The bowler is tying his shoelaces. Umar is gone for 10 in